Good morning, dear students. Standard 6, Subject Science, lesson number 14, Light and the Formation of Shadow. So first we'll see beta what is meant by a shadow. When an opaque object is kept or placed in front of the light, opaque means beta those objects which do not let light to pass through it. So light creates an outline of that object which we can call as a shadow. Now in this picture beta, can you tell me you can see anything? No, because there is darkness in that room. So what helps us to see objects with our eyes? That is light. Light helps us to see objects around us. Now what are the sources of light? So 4 pictures are given there beta. In the first picture you can see a sun. In the second picture an electric bulb. Now in the third picture you can see a fireflies. Now in the fourth picture an illuminated candle. So all these are the sources of light. Sources of light means which can produce their own light. Now luminous object is an object that emits their own light. That is the sun, a flashlight turned on. मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकते, क्रिएट कर सकते, एमिट्स कर सकते, आर नोन एज luminous objects. Examples are given there beta: an electric bulb, a flashlight turned on, and a sun. So these are the examples of luminous objects. ऐसे objects जो अपनी lights खुद emit कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. Now non luminous object beta, non luminous objects do not create their own light. मतलब वो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस या एमिट नहीं कर सकते हैं. सो हाउ आर वी एबल टू सी दैम? तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कैसे दे सकते हैं बेटा? विद द रिफ्लेक्शन ऑफ light from the other sources of light we can see non-luminous objects because of the light reflected of them. मतलब अदर सोर्सेज ऑफ लाइट से जब वो रिफ्लेक्ट करते हैं तभी हम उन्हें देख सकते हैं. लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, वी सी लुमिनस ऑब्जेक्ट्स सच एज द सन, फायर्स, light bulbs and stars because some of the light they emit enters our eyes. Non-luminous, we see non-luminous objects because some of the light they reflect enters our eyes. So these are the examples of luminous and non-luminous objects. Now artificial light are those light which are man-made. मतलब इंसानों द्वारा बनाए हुए जो लाइट्स होते हैं, जो हम इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं. फॉर एन एग्जाम्पल लैम्प, मैचेस एंड कैंडल. और नेचुरल लाइट बेटा बिल्कुल इसके ऑपोजिट, विच आर नॉट मैन मेड, मतलब इंसानों द्वारा नहीं बनाए गए हैं, वो नेचुरली अपनी लाइट्स जो है वो एमिट्स करते हैं. एग्जाम्पल्स आर सन, स्टार्स एंड फायरफ्लाई, जैसे हम जुगनू भी कहते हैं बेटा. सो दीज आर आर्टिफिशियल लाइट्स एंड नेचुरल लाइट्स. ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ लाइट. बट फ़र्क सिर्फ इतना है बेटा कि एक नेचुरल है जैसे कि सन, स्टार्स एंड फायरफ्लाई, और एक आर्टिफिशियल लाइट्स होते हैं जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं. फॉर एन एग्जांपल लैम्प, मैचेस, फायरफ्लाइज. हाउ डज लाइट हेल्प अस टू सी? हमें कैसे लाइट के जो सोर्सेज होते हैं वो हेल्प करते हैं ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए? दिस इज बिकॉज दिस थिंग्स रिफ्लेक्ट लाइट इन टू आवर आइज. व्हेन लाइट बाउंसेज ऑफ समथिंग वी से दैट लाइट इज रिफ्लेक्टेड. सो विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी कैन सी अदर ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो which do not emit light. How does light help us to see objects? Light travels to an object and then travels from the object to our eyes, मतलब reflection of light. In order for us to see an object, there needs to be a straight path of light from the object to our eyes. मतलब हमारे ऑब्जेक्ट से लेकर हमारे आँखों तक बिल्कुल स्ट्रेट जो है बेटा वो पाथ होना चाहिए ताकि हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख सके जब उनमें लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो. ये देख सकते हैं बेटा, इन द मॉर्निंग और इन द आफ्टरनून वी कैन सी रेज ऑफ लाइट कमिंग इनटू आवर रूम फ्रॉम द विंडो और डोर और एनी होल इन द रूम. सो with this example we can say, because with the help of reflection of dust particles, with the help of reflection of light from the dust particles, we can say that light travels in a straight line. The propagation of light. In physics, propagation is a process by which light or sound waves travel.